Good evening everyone. Welcome to Unacademy. So guys, in this session I'm going to teach you circles. जहाँ पे हम circles के कुछ important terminologies देखेंगे circles के बारे में, and we'll go through few definitions, few properties and few theorems. Okay. So it will just take 15-20 minutes to brief about the circles, and then we are going to practice few interesting questions from the CAT exam perspective. Hello Tushar, hi. Okay, just let me check if everything is okay. Hello everyone. Okay, so let's begin. Those who are watching me for the first time, guys, let me quickly introduce myself. My name is Shyam Jagrut. I have been training the student for last 8 years. I have trained more than 7,000 students for MBA entrance exams like CAT, SNAP, CET and many other exams. And I do teach the students for quantitative ability, logical reasoning and data interpretation. So guys, agenda for today's session, as I said, हम circles की कुछ theorems, important properties discuss करेंगे quickly in 15-20 minutes, and then we'll go ahead with the practice questions. And आज के questions काफी tricky रहने वाले हैं, so I'll give time in between. So every time I jump to the new questions, you need to try it at your own quickly and drop in the comment section the answers. Okay, those who are new to our channel, quickly subscribe to Unacademy CAT4MBA. This is our new channel for CAT preparation, and we do have one Telegram group as well, that is CAT4MBA, where you'll be getting the PDF material for each and every session that we conduct here on YouTube, as well as on the as well as for the sessions that those we conduct on Unacademy platform. So these are few plans of Unacademy plus subscription. You can go for it. I'm soon going to launch a course, a plus course. So next Friday I'll be starting with a plus course, which will be in which I'll be covering numbers and followed by permutation, combination, probability always and we'll also do few more modules related to modern maths. So you can use this code SHAM1 to avail 10% of discount. So those who are willing to go for the plus subscription of Unacademy, do not forget to use this code SHAM1. It is SHYAM numeral 1. So let's begin, guys. Let's start with the definitions of the circle. So circle का definition most of the student ने अपने schooling time में ये definition पढ़ा हुआ है सबने. A circle is a set of all those points in a plane which are equidistant from a given point, and that point is nothing but the center of the circle, right? Then so these are the very basics. You know what is radius, and circle has one and only one center. Then circle has infinite number of radii as well as diameters. So first thing, let me quickly tell you, ये सब चीजें already काफी लोगों को पहले से पता होगी, but just to make sure you know all these things, terms, because ये questions में use होगा tangent, secant, chords, तो ये wordings तुम्हें समझ में आने चाहिए. कोई भी दो circumference के point अगर हम connect करते हैं, we call it as chord. So this is chord AB. Then we have diameter. Diameter is the longest chord you can have. जो भी chord center से pass होता है, that is the diameter, and that is the diameter is also a chord, and that is the longest chord. Then we have tangent. Tangent is a line which touch circle in exactly one point. And what is secant? Secant क्या होता है guys? जो circle को दो point में touch करती है, line which intersect the circle in two different points, exactly 2 points, so we call it as secant. So remember these terms. After that आते हैं length of arc क्या होता है. Let's say this is the arc XYZ. I'll take minor arc, this one. So if I want to calculate the length of this arc, so all of you must be knowing that is circumference of the circle is 2 pi r, and we know the angle at center is 360 degrees. So 360 degree corresponds to the complete circumference. So that's why if this angle is theta,
theta degree corresponds to what? It's simply a cross multiplication. You can say theta upon 360 into 2 pi r. So this is formula. This formula is nothing but a cross multiplication. And same thing we can do it for area of sector as well. So let's talk about area of sector. You know, complete circle is pi r square. So अगर theta angle है यहाँ पे center पे, so area of sector will be theta upon 360 into pi r square. And if you want to calculate the area of the segment, this part we call it as segment. Okay. तो segment का area अगर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? Sector का area minus this area of triangle. That's simple common sense. Hopefully all of you will be able to remember these two things. क्या क्या हमने सीखा? Length of arc and area of sector. Remember these two formally. Thanks Rishi. So this is your first session. You are interacting with me for the first time. So have you gone through the previous sessions? So if you are new to this channel, I'll definitely recommend go through a few LRDI sets as well. मैंने last month complete CAT 2017, CAT 18 and CAT 2019 के दोनों slots के complete video solutions available है actual CAT paper. So must recommended videos I can say from my side. Okay, and if you want to brush up your basics of arithmetic, मैंने last week ही arithmetic complete किया and now we are doing geometry. This is the third session of geometry. Okay, so let's go ahead and discuss few properties now. कुछ important properties. Area of segment तो मैंने अभी तुम्हें बताया. Segment का area अगर हमें चाहिए तो area of sector minus area of that triangle. That's what you can do. Okay, so now most important part starts from here, guys. Those who are new to the geometry and जिनको basics बिल्कुल पता नहीं है उनके लिए मैं next 10 minutes कुछ points बताऊंगा, वो तुम्हें याद रखने हैं. तो most of you must be knowing. तो देखो ये chord नहीं है, guys. This is the center and this is diameter. This is the property of the diameter only. Okay. So diameter subtends right angle at any point on the circumference. ठीक है. जैसे अगर कोई भी सर्कल है यहाँ पे डायमीटर, लेट्स टेक दिस पॉइंट एज एक्स वाई, आई टेक इट एक्स. ओके, तो डायमीटर एक्स वाई को तुम कोई भी सर्कमफ्रेंस पे एक रैंडम पॉइंट ले लो जेड और उसको एक्स से कनेक्ट कर दो, वाई से कनेक्ट कर दो, श्योरली यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा. अगर ये पॉइंट तुम सेंटर से सर्कमफ्रेंस से बाहर लेते हो तो ऑफकोर्स ये एंगल छोटा बनेगा, दैट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल. एंड अगर तुम अंदर पॉइंट लेते हो सर्कल के तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगा, राइट. तो दैट सिंपल कॉमन सेंस, तुम ड्रॉ भी करते हो तो भी पता चलेगा. बट वन थिंग इज फॉर श्योर, ये राइट एंगल वाला प्रॉपर्टी हमें काफी बार यूज करना होता है. तो व्हेनेवर इट इज गिवन डायमीटर एंड यू आर कनेक्टिंग एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, डजंट मैटर वो ऊपर के सेगमेंट में है या नीचे के सेगमेंट में है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा anywhere a point. So diameter subtends right angle at any point on the circumference of the circle. That's what you can say. Okay, let's go ahead and discuss few more things. Okay, देखो अभी chord को bisect ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है गाइस. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये अभी बहुत इजी लगेगा कि हाँ ये तो क्लियरली दिख रहा है कि हाफ ऑफ हो रहा है. जब भी तुम कोई भी कॉर्ड में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो डेफिनेटली वो परपेंडिकुलर कॉर्ड के मिड पॉइंट से जाता है. बट द थिंग इज जब ये क्वेश्चन में आता है फिर तुम यूज नहीं कर पाते हो प्रॉपर्ली. सो मेक श्योर यू आर वेरी क्लियर अबाउट दिस. इफ आई ड्रॉ एनी कॉर्ड एक्स वाई एंड मैं ओ से अगर यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये बाइसेक्ट होगा. एट द सेम टाइम ये वाइस वर्सा भी ट्रू रहेगा. अगर मैं इस कॉर्ड का मिड पॉइंट अगर कनेक्ट करूंगा तो डेफिनेटली दिस लाइन, इफ आई कनेक्ट द मिड पॉइंट टू द सेंटर, दिस हैज टू बी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को, और अगर कॉर्ड का मिड पॉइंट तुम सेंटर से कनेक्ट करोगे तो डेफिनेटली वो परपेंडिकुलर रहेगा, राइट. सिंपल थ्योरम है. अच्छा, एक और चीज देखो, कोई भी सर्कल में जब भी तुम्हें कॉर्ड ड्रॉ करना है, अगर तुम सेंटर के पास में कॉर्ड ड्रॉ करोगे तो लेंथ ज्यादा आएगा एंड
सेंटर से दूर ड्रॉ करोगे तो डेफिनेटली कम आएगा, दैट्स सिंपल कॉमन सेंस। बट हैव यू नोटिस द प्रॉपर्टी, अगर मैं ये डिस्टेंस सेम रखूंगा, यहाँ पे मैंने लेट्स से x डिस्टेंस पे ये कॉर्ड ड्रॉ किया है सेंटर से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो अगर उतने ही डिस्टेंस पे मैं वापस से एक दूसरा कोई कॉर्ड ड्रॉ करूंगा तो डेफिनेटली दोनों कॉर्ड का जो लेंथ होगा वो इक्वल रहेगा, वी कॉल इट एज इक्वल कॉर्ड्स। जो भी इक्वल कॉर्ड्स रहते हैं उनका सेंटर से डिस्टेंस सेम होता है, राइट? सेंटर से उस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल रिमेन सेम फॉर द इक्वल कॉर्ड्स। व्हाई? बिकॉज द कॉर्ड का लेंथ जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो सेंटर के पास में है या दूर है। तो तुम सेंटर से दोनों कॉर्ड एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे ड्रॉ करोगे तो दोनों कॉर्ड का लेंथ डेफिनेटली सेम आएगा। सिंपल कॉमन सेंस यू कैन से। एंड सर्कल्स के मैक्सिमम थ्योरम ऐसे हैं, तुमने एक बार भी पढ़ लिए तो वन रीडिंग में तुम्हें वो समझ में भी आएगा, ये क्यू इक्वल आएगा एंड डेफिनेटली अपने माइंड में फिट हो जाएगा। तो यू शुड बी एबल टू यूज दिस। ऑफ कोर्स यहाँ पे काफी सारे ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज, नंबर ऑफ थ्योरम्स थोड़े ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज मेनली यू कैन से। तो बट एक वन गो में तुम सारे याद कर सकते हो, डेफिनेटली दैट्स really easy. So hopefully both of you understood this part. I'm not able to see your comments coming. Okay, so let's go ahead and talk about few more theorems and properties related to that. Next thing, a tangent drawn from and any exterior point are equal in length. That simply means तुम कहीं भी एक पॉइंट लो गाइस, इस पॉइंट से तुम दो ही टैंजेंट ड्रॉ करोगे। लेट्स से P इज द एक्सटर्नल पॉइंट, यहां से मैं इस सर्कल को दो ही टैंजेंट ड्रॉ कर सकूंगा और दोनों ट्रायंगल, दोनों टैंजेंट के जो सेगमेंट क्रिएट होंगे PA एंड लेंथ ऑफ सेगमेंट PA हैज टू बी इक्वल टू length of segment PB. That's a simple thing to remember, right? Then the most important property comes here. Let's say कोई भी chord या फिर arc, देखो DC is a chord, even you can say DEC, this is a arc, okay? तो ये आर्क के दो एंड पॉइंट्स को तुम सर्कमफरेंस के कोई भी पॉइंट से कनेक्ट करो। जैसे यहाँ पे बी से कनेक्ट किया, दिस एंगल हैज टू बी थीटा। अगर ये थीटा है तो तुम दूसरा कोई भी पॉइंट कनेक्ट करोगे उस सेगमेंट में तो वो थीटा ही आएगा। इवन किसने यहां से कनेक्ट किया एंड लेट्स से दिस एंड let's take that point as f, so this angle will also equal to theta। यहाँ पे तुम कितने भी angles obtain करो तो angles obtained by that arc or this chord DC are always equal। the same way अगर तुम opposite segment में ट्राई करोगे ना गाइस, ये भी सारे इक्वल होंगे बट थीटा नहीं होंगे। this will be 180 minus theta, 180 minus theta, that's what you can remember। ऋषि, तुषार, ये दोनों यहां तक के सारे थ्योरम्स इजी लगे सबको? इजी टू रिमेंबर गाइस, बिकॉज क्वेश्चंस काफी ट्रिकी होंगे तो तुम्हें ये सब चीजें पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं। ओके, ट्राई टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू, कुछ समझ में नहीं आया तो तुम पूछ सकते हो, बिकॉज ये काफी इजी चीजें हैं। सो आई थिंक आई कैन गो फास्ट अ बिट्स, पेज से हम यहाँ पे जा सकते हैं डेफिनेटली। चलो लेट्स गो फॉर दिस। अभी मैंने जो बताया, अगर कोई भी कॉर्ड है, लेट्स से डीबी द कॉर्ड, वो मेजर सेगमेंट में अगर थीटा एंगल्स ऑब्टेन कर रही है तो अदर सेगमेंट दैट इज द माइनस सेगमेंट में वो डेफिनेटली 180 माइनस थीटा। और सिंपली यू कैन से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बन रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री रहते हैं, दैट्स व्हाट यू कैन रिमेंबर। ओके, इन दोनों का एडिशन भी 180 होगा, इन दोनों का एडिशन भी 180 होगा for cyclic quadrilateral। That's the property of cyclic quadrilateral, basically that's the property of circle। Then next thing, the most important, so
Guys, the angle subtended by an arc or a chord. So CXB is an arc, or you can say CB is a chord. So CB सेंटर पे अगर 2 थीटा एंगल सबटेंड करती है तो वही chord कहीं पे भी दूसरे किसी भी पॉइंट पे उसी सेगमेंट में, ओके, दिस एंगल विल बी थीटा. डोंट टेल मी सिर्फ यहाँ पे ऊपर ही रहेगा, कुछ नहीं है, ऐसे तुम ड्रॉ करोगे, दिस विल ऑल्सो बी थीटा. Have you understood this part? Tushar, Rishi, shall I prove this? How to prove it? चलो, अगर ये हमें प्रूव करना है तो हम कैसे प्रूव कर सकेंगे इसे? I'll just give few hints. यहाँ पे एंगल x होगा तो ये भी x होगा, बिकॉज ये दोनों रेडियस है, तो रेडियस है तो डेफिनेटली ये आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा, राइट. लेट्स दिस एंगल बी y एंड दिस एंगल बी z, बट द प्रॉब्लम इज व्हाट आई डू, आई ड्रॉ वन मोर थिंग. चलो मैं थोड़ा सा और इजीली समझा देता हूँ. अगर मैं ये पॉइंट कनेक्ट करता हूँ तो तुम इसको प्रूव भी कर सकते हो. सिंपली ये x है तो ये एंगल भी x होगा, बिकॉज ऑफ दिस विल बी द आइसोसेलेस ट्रायंगल. सेम वे ये y है तो ये भी y होगा, ये अगर z है तो ये भी z होगा डेफिनेटली, राइट. तो कैन आई से ट्वाइस ऑफ x प्लस y प्लस z, दैट्स द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. 2x प्लस 2y प्लस 2z, अगर ये तीनों एंगल्स तुम ऐड करोगे तो ये 180 डिग्री होना चाहिए. तो डेफिनेटली x प्लस y प्लस z हैज टू बी 180 का हाफ, दैट इज 90 डिग्री, राइट. देन यहां पे जो एंगल है अभी ये 2 थीटा का वैल्यू, ये एंगल में 2 थीटा यहां से हटा देता हूं. दिस एंगल हैज टू बी this is also a triangle, so this value of 2 theta will be 180 minus 2x. I'll not take it as 2 theta because we are going to prove it is that is double, okay. And this is y plus z. So can you tell me what is the value of y plus z? Y plus z will be, look at this, y plus z has to be 90 minus x, and this is 180 minus 2x. तो देखो 90 माइनस x का डबल अगर करोगे तो 180 माइनस 2x आता है, दैट इज द ट्वाइस ऑफ दिस. सो y प्लस z ये एंगल है एंड 2 यहाँ पे आया 180 माइनस 2x. सो सिंपली आई कैन से दिस एंगल इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट A. होपफुली यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. Right, so this is how we can prove that part. Then let's move to the next thing. Okay, tangent secant theorem. Remember this theorem. If we draw a tangent from any external point P which touches the circle as T, and a secant from the same point, तो secant कहाँ पे टच करेगा, A पे और B पे. So remember this, if we multiply PA, length of segment PA and the length of segment PB, इन दोनों को multiply करोगे तो definitely ये B का square आएगा. That's what you need to remember easily. That's the tangent secant theorem. Do not go for the proof, that's perfectly fine because in CAT we are supposed to use these things, ठीक है. तो मेन इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें याद रखना है. यू कैन डेफिनेटली प्रूव दैट ऑल्सो. देन वन मोर alternate segment. So we are going to prove this. चलो let's try how this angle is equal to this. So there is a chord CB which subtend the angle at alternate segment, मतलब ऊपर वाला, और यहां से हमने एक tangent ड्रॉ किया है C से, और tangent यहाँ पे एक एंगल सबटेंड कर रही है. So how to prove this? The one thing you can do is you can just connect this C to the center, connect this to the center. Okay, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये x होगा, ये भी x होगा, right?
ओके, यू कैन टेक द सेम थिंग, यू कैन से मैं यहाँ पे y लेता हूँ, ये भी y होगा, ये z होगा, ये भी z होगा. सो ये थ्योरम्स घुमा फिरा के वहीं पे घूमेंगे हमेशा ये. दिस इज हाउ यू कैन प्रूव इट. ओके, तो वी नो दिस पार्ट इज 90 डिग्री बिकॉज ये हमने कनेक्ट किया है, टच टैंजेंट को टच कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 90 डिग्री होगा, राइट. तो वैल्यू ऑफ थीटा, दिस एंगल विल बी 90 minus x, and now we are supposed to prove that is this is 90 minus x. You can simply prove it is 2x plus 2y plus 2z has to be 180 degree. So definitely x plus y plus z has to be 90 degree, and you can have y plus z as 90 minus x, which is this angle is also 90 minus x, and this is also 90 minus x. So that's the proof कि ये दोनों एंगल सेम होते हैं. Have you understood this, guys? Give me a thumbs up if you understood this part. So need not to prove each and everything. Try to remember the theorems as it is. Okay, वो as a properties तुम याद रख लो, जैसे हम properties याद रखते हैं वैसे. Simple logic है. ओके, एनीवेज, एंड दैट रियली डजंट मीन कि अगर तुम्हें थ्योरम याद नहीं है, थ्योरम याद है तो तुम डायरेक्टली ये इक्वल ले लोगे, अगर नहीं है तो फिर तुम्हें हर एक क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त उसमें फिर तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा, एंड डेफिनेटली दैट इज पॉसिबल. ओके, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर दो सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं so the common chord is the bisector is a perpendicular, sorry, the line joining the centers of the two circles will be definitely perpendicular to a common chord, and perpendicular है तो of course वो bisector तो करेगी, so perpendicular bisector, that's really easy thing. Okay, now two important part I want to remember as it is. Okay, common tangent. So common tangents में दो चीजें होती है, direct common tangent and एक है transverse common tangent. So we'll focus on direct common tangent because ये जो है AB is a direct common tangent, ऊपर से एक होगा और एक नीचे से भी ड्रॉप कर सकते हो, CD. ये भी DCT है, that is direct common tangent. बट डेफिनेटली AB का लेंथ एग्जैक्टली CD जितना ही रहेगा. टेंजिबल असेट, ओ नमस्ते. सो AB एंड CD दोनों का लेंथ सेम रहेगा. सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, व्हाट इज D, गाइस? यहाँ पे D का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स. ओके, तो दिस इज D एंड दिस डिपेंड्स ऑन ये सेंटर कितने दूर है. एट द सेम टाइम इस सर्कल का रेडियस कितना है. लेट्स से दिस इज R1, दिस इज, लेट्स से दिस इज R1 एंड दिस इज R2. So remember this formula, D, it is square root or DCT, length of DCT will be square root of D square minus R1 minus R2 whole square. एंड अगर ये TCT होगा तो यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाएगा, जस्ट यहाँ पे प्लस आएगा, रिमेंबर दिस पार्ट. एंड ये होता है TCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. डोंट गेट इनटू द प्रूफ, ये सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव होता है, बट ऑफ कोर्स प्रूफ का मेथड थोड़ा सा लेंदी है, सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. Try to remember this formally. Remember this as a formally. Let's not get into that. Okay, so good to go. Hi Shekhar, तुम नए हो? Okay, so basics geometry पढ़ा है इससे पहले कभी? तो दिस इज द थर्ड सेशन ऑफ ज्योमेट्री. आज यहाँ पे सिर्फ सर्कल्स नहीं रहेगा. ओके, फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, मैंने इससे पहले लाइंस, ट्रायंगल्स कंप्लीट किया है एंड पॉलीगॉन्स कंप्लीट किया. पॉलीगॉन्स इन द सेंस बेसिकली क्वाड्रिलैटरल्स ही ज्यादा था उसमें, क्वाड्रिलैटरल्स एंड फ्यू अदर पॉलीगॉन्स लाइक पेंटागन, हेक्सागन एंड फ्यू प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू दैट. सो यहाँ पे हमें ट्रायंगल्स का थोड़ा सा सिमिलैरिटी वगैरह यूज करना पड़ सकता है, कुछ क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टीज भी हमें यूज करने पड़ सकते हैं. तो रिमेंबर वन थिंग, वन पॉइंट यू शुड नो अबाउट द क्वाड्रिलैटरल. क्वाड्रिलैटरल में जब भी डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं तो एरिया ऑफ दैट क्वाड्रिलैटरल इज ऑलवेज हाफ इनटू D1 इनटू D2.
half into product of the diagonals. That's quite important in my opinion. तो जो काफी लोग इसको यूज नहीं करते हैं बाकी क्वाड्रिलेटरल्स में. सो डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, वो सारे प्रॉपर्टीज भी हमें यूज करने पड़ेंगे. ओके, सो शेखर, ऋषि, तुषार, hopefully good to go, and we can so I think it's good to go and we can start with the questions. ओके, यू वांट टू प्रिपेयर सीरीज. तुम्हें कैट प्रिपेयर करना है या सीरीज बना के बेचना है? चलो लेट्स. But definitely students do not prefer the recorded sessions, otherwise we won't be coming live. So let's go ahead anyways guys. That's particular that is the different perspective. What happened, Shekhar? Good to go. Shall we go ahead with the questions? Chalo guys, I want you to solve this question and let's see. मैंने answer options यहाँ पे intentionally नहीं रखे हैं because I want you to think and drop in the comment section whatever you think. चलो try करो. Find the distance between two parallel chords of length 6 centimeter, 8 centimeter in a circle with radius 5 centimeter. I just wanted to check your observation skills. How many of you can answer it correctly? It's not a tough question at all. इतना सिंपल लग रहा है तो थोड़ा सा एक ट्रैप है. आंसर ऑप्शंस होते तो तुम्हें समझ में आता, बट इंटेंशनली मैंने वो हटा दिए हैं. I want you to think what exactly the meaning. Okay, so the distance between two parallel chords of length 6 centimeter and 8 centimeter in a circle with radius 5 centimeter. तो ये दो chords के बीच में कितना distance होगा, that's what we are supposed to calculate. Can anybody answer me? Definitely guys, answer is expected for this question. और अगर तुम ये आंसर नहीं कर पाए तो फिर आज के क्वेश्चंस तो काफी ट्रिकी है आगे. ओके, so you should answer this one. Any one of you, any answer guys? किसी का भी नहीं आया अभी तक. Don't be too slow. जब भी मैं क्वेश्चन नया स्टार्ट कर रहा हूँ तभी तुम्हें क्विकली इसको ट्राई करना है. I'll just give 1 or 1.5 minute max to solve that. शेखर, ऋषि बताओ आंसर. तुषार, no one yet? I'm not sure. You're not commenting or I'm not able to see your comments. So guys, chord of length 6 centimeter, ये कम लेंथ है, ये दूर होगी, और 8 सेंटीमीटर वाली थोड़ी सी पास होगी, राइट? Radius of the circle that we know, that is 5 centimeter. So diameter must be 10. ओके शेखर बताओ, तुम्हें आ रहा है आंसर?
Let's take this is the chord of 8 centimeter. And this is the chord of 6 centimeter. Of course, dur hoga. So if we draw a perpendicular, definitely we know the property. We want this distance, but this is just the one case. यहाँ पे एक assumption हो गया इस question में. सुनो, there are two answers possible, multiple possibilities. This is not the only possibilities because मैं 6 सेंटीमीटर की इस साइड भी तो ले सकता था कॉर्ड, तो ये डिस्टेंस तो कम हो जाएगा, राइट? सो विल सॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटीज. सो ऑफ कोर्स आंसर ऑप्शंस होते तो इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होता, बट एनीवेज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द पॉसिबल आंसर्स. ओके, तो लेट्स कैलकुलेट द पॉसिबल आंसर्स. ये डेफिनेटली 3 होगा, ये 3 होगा बिकॉज कॉर्ड परपेंडिकुलर जो है वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को. दिस रेडियस इज 5. सिंपल बेसिक पाइथागोरस ट्रिपलेट है यहाँ पे. So this is 5, this is 4, 4, and so what is the basic Pythagoras triplet, guys? 25 square. यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 4. So distance is 4 plus 3, that is 7. And the other possibility for this question is we can draw a different circle, and where I'll be drawing two chords on the same side of the center. या तो ऊपर या तो नीचे, दोनों भी केस में सेम ही आंसर आएगा. And I'll draw perpendicular from here. तो ये हो गया 5, ये हो गया 4, तो ये होगा 3. Then we draw perpendicular from here 4, यहाँ पे 3 होगा, that is 5. Okay, so this will be 4. This complete distance will be 4. Okay, so the distance between this chord will be just 1. So answer is either 7 or 1. Have you understood this part? Those who are watching this session, hopefully you understood this. Okay, so next thing, again an important question type, not that tough, right? So the radius of the circle is 5, so these two lengths will be 5. P and PB definitely ये दोनों लेंथ भी सेम होंगे. If AP is 7, so if AP is 7, PB has to be 7. That's the simple property. Okay, एकदम basic question है, so I'll go bit fast here. Okay, so if AP is 12, that is only for answer option A. Oh, sorry, question number A. Okay, so there are 4 sub questions here. Okay, Shekhar, some student will join later, I'm quite sure. This is a bit odd time, but they do watch the session. Okay, so any answer for this? AP is 12 and find the OP. That's the simple Pythagoras theorem. 12 square plus 5 square will be 12 square plus 5 square has to be 13 square. So this will be 13. Hopefully I can speed up now. Okay, so AP is equal to 5 and angle APB we are supposed to calculate.
हाँ, डेटा खत्म हो जाता है 10 बजे तक, राइट? सबका। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु कीप ऑन कमेंटिंग कि सर हम बाद में सेशन देख लेते हैं बिकॉज ऑफ द इंटरनेट इशू. So that's why your comments are a bit slow. Okay, so if AP is 5, angle APB, AP is 5, that's quite simple because AP अगर 5 है तो ये भी 5 है. This is right angle triangle, so definitely ये दोनों angles भी same होने चाहिए. So it has to be 90 degree because it will be a square then, right? APB. Then this one is simple, bit tricky you can say. Let's talk about this, the last one. AP is 5 root 3. Let me tell you what about this question. Okay, so the tricky thing is here, guys. अगर तुम इसको solve करोगे ना तो भी solve हो जाता है, but I wanted to share a trick with you. Simply remember, all of you must be knowing 30 degree, 60 degree and 90 degree angle triangle theorem. मैंने बताया भी था ये last session में. Okay, that's fine, no issue. Can watch it later. Okay, so hypotenuse अगर 2 है तो side opposite to 30 degree half होता है and this is root 3 by 2. तो definitely अगर ये side 1 है, side opposite to 30 degree अगर 5 है, ये 5 है तो ये 5 root 3 होगा और hypotenuse definitely 10 होगा. अगर तुम ऐसे सॉल्व करते तो भी चलेगा. किसी ने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, दैट्स नॉट एन इशू, कैसे भी निकालो. But anyways, this has to be 30 degree, this has to be 60 degree. So this is my way to do, because जिन लोगों को 30 डिग्री 60 डिग्री थ्योरम 30 60 90 थ्योरम याद है उनको तो ये वैल्यूज देख के आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि ये 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल ही होगा, राइट? So this is how I can complete this question. So angle APB हमें पूछा है, so this is 30 degree and 30 degree. This will also be 60 degree 90 30 60 90 because यहाँ पे भी 5 root 3 and 5 ही होगा. So angle APB has to be 60 degree. Okay guys, so let's start with the next question. We are done with this already. Okay, now this one is quite tricky. I'll just show you the question हमें इसमें क्या क्या करना है because this is going to be a quite lengthy question you can say because here we have almost 6 sub questions over here. Okay, so what we know, I'll just explain the question. The radius of the smaller circle we know, the radius of the smaller circle, this R is 5 and we don't know the radius of the bigger circle, let's say that's capital R. Okay, and this SR we are given with SR as 8. So that's what we know and we are supposed to find the radius of the larger circle. This is the question you can finish in 1 minute. I'm talking about the first sub question. Okay, so we do have few more questions, so I'll just get you through sub questions. By the time you can simply try for the radius of the bigger circle. So length in the sense यहाँ पे questions ज़्यादा है. So we are supposed to find the length of segment AD.
ये भी हमें ढूंढना है. Then length of segment AB, length of segment AB. Then we do have one more question. What is the area of RBQC, quadrilateral RBQC? Basically this is a kite, so area of this quadrilateral. Then find BC, that is this length, and the area of quadrilateral ABQP, ABQP, this one. So these are the questions that we are supposed to solve here. Yes, last two questions here. So we can start from the beginning. Let's go ahead one by one and solve the questions. So anybody who is watching now, they can quickly drop in the comment section if you have an answer. Okay, so how to solve this? This is simply similarity of triangles. हम यहाँ पे use कर सकते हैं. देखो ये triangle RBQ is similar to triangle RAP. I can prove it to you because ये 90 degree है. This is the common angle. तो डेफिनेटली ये एंगल तो श्योरली सेम आएगा. ओके, सो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो डेफिनेटली उनके साइड्स जो होंगे गाइस, आर ए पी, इनके साइड्स तो रेशो में होंगे ना, जैसे स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर. और आई टेल यू डी क्यू करस्पॉन्ड्स टू ए पी. ये रेशो जो आएगा वही रेशो ये बिगर साइड्स का भी आएगा. अब ये साइड हमें पता है, छोटे ट्रायंगल का ये साइड कितना है, 5 + 8, दैट इज क्यू. आई एम टॉकिंग अबाउट क्यू आर अपॉन बिगर ट्रायंगल के लिए वही क्या है, पी आर. So we don't know the value of PR, but we know this is R and this is 5. So 5 + 5 is 10 + 8. So I'll write here BQ is nothing but the radius of smaller circle and AP is the radius of bigger circle, has to be equal to QR. QR किसका रेडियस है, सॉरी QR ये है जिसका डायरेक्टली लेंथ तुम्हें पता है 5 + 8 दैट इज 13. एंड यहाँ पे कितना आएगा 10 + 8 18 + R. So PR is R + 18. राइट. एंड स्मॉलर सर्कल का रेडियस तो हमें पता है दैट इज 5. So if you solve this, you'll get 5R plus 18 5s are 90 होता है is equal to 13R. So I can say 8R has to be equal to 90. So 445. So radius of the larger circle will be 11.25. That's what I can conclude. Right, hopefully all of you understood this part. So the radius of the larger circle will be 11.25. The first question we have solved. I don't think it will take more than 1 or 1.5 minutes to solve. Okay,
Calculations were not that tough. So next thing, find the length of AD. So AD ढूंढते हैं. तो बिफोर वी गेट टू एडी हमें क्या करना चाहिए, हमने जितने भी वैल्यूज हमें निकालते आते हैं पहले हम वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, देन विल गो टू द सब क्वेश्चंस. ओके, so we have got up till now this as 5, this is 5, this is 8, this is 5, this is 11.25. I'm quite sure अभी काफ़ी पिक्चर क्लियर हो गया इस क्वेश्चन के रिलेटेड. 11.25 AP. So we are supposed to calculate AD. That's a bit tricky. I do have one shortcut for this question. Okay, Pythagoras theorem लगा के of course तुम निकाल सकते हो, but that is going to be quite lengthy. So think about some other shortcut. So those who are trying this question right now, they can simply do not think about the Pythagoras theorem, guys, because Pythagoras theorem से ये काफी lengthy हो जाएगा. Okay, so what I'll do, I'll tell you one thing. So listen, what is the area of this triangle? Area of triangle RBQ. I'm talking about RBQ because anyways हमें वो calculate करना है बाद में. Okay, so अगर हम ये एरिया निकालते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आई एम टॉकिंग अबाउट एरिया ऑफ ट्रायंगल RBQ. ओके, सो दिस एरिया आई एम कैलकुलेटिंग. अदरवाइज देखो, क्योंकि हमें एरिया तो पूछा हुआ है यहाँ पे, वी आर सपोज टू कैलकुलेट RBQC. देन लेंथ ऑफ द सेगमेंट AB भी हमें कैलकुलेट करना है. You can calculate AB now, that's fine. Eight plus 5 is 13. तो ये तो आ जाएगा. चलो पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में मैं बात कर रहा था. Will be half into 5 into height we don't know. Okay, so first of all let's calculate that height. That's an easy thing. Triangle RBQ की मैं बात कर रहा हूँ. ट्रायंगल RBQ में ये 5 प्लस you can see BQ square plus BR square has to be equal to SR square. SR is 13 square. BQ is 5 square, and this must be, so 169 minus 25, it has to be 12. X has to be 12. तो BR is 12. तुम सिंपली डायरेक्टली भी लिख सकते हो. ये 5 है, ये 13 का स्क्वायर है, और 8 plus 5. ओके, both including these two. Then this must be 12. Okay, so we have got it 12. The same way you can calculate AP as well. Sorry, AR. I'm talking about AR. Okay, now let's calculate area of triangle RBQ. Or in triangle, I'm calculating few more values जो मैं आगे use करने वाला हूँ, guys. I'm not just calculating AB. Okay, let me clearly tell you, I'm not just calculating it for AD. मैं सारे questions के लिए आगे try कर रहा हूँ, सारे सब questions के लिए. Okay, so the same way, if you use one thing, in triangle RAP, we'll use the Pythagoras theorem. AP square plus AR square has to be equal to PR square.
Okay, so AP we know that is 11.25 square plus 11.25 square plus AR square has to be equal to 5 plus 8 is 13 plus we have to do this calculation. So 16 plus 8 is 24.5, 24.2. 24.25 square. Hopefully all of you understood this part, guys. So even if you do it to calculate this, what you can do, AR equal to 24.25 whole square minus 11.25 whole square, and we can use the formula for A plus B into A minus B. So if we add these two things, A square minus B square, it has to be A plus B into A minus B. That's not a big deal, but ये calculations करते वक्त तुम्हारे माइंड में ये चीज आनी चाहिए, नहीं तो फिर तुम कैट है तो तुम कैलसी भी यूज कर सकते हो, दैट्स परफेक्टली फाइन. Okay, so 24.25 plus 11.25 has to be 24 plus 11 is 35.5 into इन दोनों का डिफरेंस 24 minus 11, it has to be 30. So 35.5 into 30 has to be AR square, that is 461. So AR is under root of 461. So I'll write it approximately 441. Approximately you can say 21.2 or 21.3 something I know, right? Is there any doubt, guys, up till now? Okay, Shekhar is saying 7 minutes पीछे चल रहा, buffering. Okay. Okay, so this will be actually close to 21.5. So we are but still हमारा AB तो नहीं मिला है हमें. So length of AD अगर चाहिए हमें, so what is the area of this triangle? Area of triangle APR will be equal to half of
I'll keep it as root of 461, will not use this value. Okay, that's perfectly fine. Then एरिया ऑफ ट्रायंगल APR अगर हमें चाहिए हाफ इंटू 11.25 इंटू अंडर रूट ऑफ 461. So the area of quadrilateral, I'll do it here. Length of segment AB तो हमें मिल गया. It is कितना है था अपना 21.5. This was 21.5 and this was 12. तो 12 माइनस करोगे तो ये 9.5, right? Then we are done with this. मैं कौन सा बता रहा था, लेंथ ऑफ AD कैसे निकालना है. ओके, एनीवेज, सो विल कैलकुलेट एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल RAPD. टॉकिंग अबाउट दिस. ओके, इस ट्रायंगल का एरिया हमने अभी कैलकुलेट किया था. दिस इज द एरिया. तो इसका डबल करेंगे तो हमें ये ट्रायंगल तो दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो इसका डबल करोगे तो इट विल जस्ट 11.25 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 461. राइट, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द एरिया ऑफ काइट. What is the area of kite? Area of kite होता है d1 into d2 का half. That is half into its diagonal. Half into d1 into d2. That's the formula for area of kite. And this is a kite. ये दोनों साइड सेम है, ये दोनों साइड सेम है. ओके, सो d1 हमें पूरा पता है, यहाँ से यह 11.25, फिर ये 10 एंड फिर ये 13, सॉरी 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 11, that has to be PR. PR कितना लिया था हमने, 11.25 plus 5 is 10 point. Sorry, there is one mistake in calculation. So let me just calculate once again. This is not 461. This is half of 11.25. That is correct. But this was 29.25 and this has to be 29.25. I'm sorry. I just need to change the calculation. Just a minute. So this one is also a small correction because it was 10 plus 21.5 plus 8, 29.5, right? So what I'll do, 29.25 29 plus 11 is 40.5 into इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लेते हैं 29 minus 11 is 18, so I'll multiply it by 18. Okay, so it should be 40.5 into 2, it has to be 1 and 9 722, sorry, it should be 729. Sorry, it's a perfect square. We have got AR as square root of 729, which is 27. Sorry, that's a perfect square. So this one is 27, so we have got AB as 15. My mistake. This as 15. Okay, so now the area of quadrilateral, just a minute. So
this area will be 11.25 into 27, right? And it is half into 29.25 into the length AD. So AD has to be equal to 11.25 का डबल करते हैं 22.5 into 27 divide by 29.5 29.25. Right, so let's calculate this. 22.5 so that will come approximately only, but anyways the final answer for AD will be in point, but this is not in point. We have got AR, that is 27, and this will be close to 21, I guess. So AD has to be close to 21. I'll write here. Okay, so anyways, so this is the only value जो थोड़ा integer में आ रहा है, बाकी values हमारे easily आ जाएंगे guys. चलो, let's go ahead and finish with the calculation, sir. So hopefully you understood how I got this AR, then BR, then we got AB as 15. Just one thing, AD is coming in point, that is close to 21. I'm saying it's not exactly 21. So it is 20.75, you can see, that is close to 21. Okay, then let's go ahead. We have got AB as 12, not 15, and this is 12. BR is 12. Then let's finish this. Area of RBQC, that's very simple now because we know this is 12, this is 15, this is 5. So area of this triangle is 5 into 12. This has to be 60. Half into 5 into 12, और उसका डबल करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे दो ट्राइंगल है. That comes out to be 60. After that last two questions, BC अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? Again this is the kite, so half into the diagonals BC into QR must be equal to the area of quadrilateral RBQC. RBQC का एरिया कितना था? ये 12 है, ये 5 है, राइट? सो ये भी 5 और 12 था, तो 30 plus 30 is 60. दिस हैज टू बी 60. सो BC इंटू QR, तो QR हमें पता है ये 8 है, ये 5 है, 8 और 5 13 into BC has to be equal to 120. Again this is in point, ये दो वैल्यूज पॉइंट में आ रहे हैं. 120 डिवाइड बाय 13 close to 9. 13 9s are 117.23, 9.23. एंड quadrilateral ABQP हमने ऑलरेडी निकाला था 11.25, and this total was 27. So this is
twice of half into base is 11.25. Abhishek, you have to check with your net connection. क्या हो गया? डेटा खत्म हो गया? Because it's working perfectly fine. I have just checked in my mobile. So this will be half 11.25 into 27. You can simply multiply 27 into 11. If you multiply 27 into 11, it is 297 plus 0.25 into 11. If you want to do, this will be 1/4 of this, right? So 13.5 kaha 0.25, which comes out to be 303.25. So answer for this will be 303.25. Okay, so एक जगह पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, दैट्स व्हाई, अदरवाइज इट्स नॉट दैट लेंदी. Okay guys, so ready for the tricky questions? Few more tricky questions. I'm going to do it today itself. आज का सेशन खत्म नहीं हुआ है अभी तक. Okay, so last 20 minutes or 25 minutes depending on you, there are few tricky questions that I want to cover today itself. Okay, so in the figure given below, the chord ED is parallel to diameter AC of the circle if angle CBE is 65 degree, angle CBE is 65 degree. It's not that tough. चलो ये तो कर सकते हो सब लोग. Then what is the value of angle DEC? Angle DEC, we are supposed to calculate this. Any answer? अभिषेक, शेखर तो स्लो चल रहे हैं. ओके सो गाइस, वन थिंग देखो, अभी यहाँ पे कंप्लीटली क्रिएटिविटी पे डिपेंड है. ऐसे भी तुम बोल सकते हो, अगर तुम्हें सर्कल्स के थ्योरम्स याद होंगे, सो ये एंगल, अगर दिस इज द कॉर्ड EC with subtending angle 65 degrees, so EC will definitely subtend the double of 65, that is 130 degree here. ओके सो या आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, एंड ये पैरेलल तो दिया हुआ है, ये तो ऑल्टरनेट एंगल्स भी आ जाएगा अपना. तो ये 50 डिग्री बचता है, यहाँ पे 25 डिग्री होगा, दिस विल ऑल्सो 25 डिग्री. तो डेफिनेटली ये जो एंगल है एग्जैक्टली ये दोनों सेम रहेंगे, विल बी 25 डिग्री. Angle DEC, I got it as 25 degree. Not that tough. Hopefully you understood this. Okay, so let's move last two questions for the day, but काफी questions tricky है. So see if we can solve this. I do have two more questions. This is the old CAT papers. Old CAT. I don't remember the year, but definitely ये question आया हुआ है CAT में. You can try it for 1 or 2 minutes, see if you can give it a try. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ये तो आंसर ऑप्शन से पता चल जाएगा, बट आंसर ऑप्शंस काफ़ी ट्रिकी थे. जब मैं अभी आंसर निकालूंगा देन you'll अंडरस्टैंड कि आंसर ऑप्शन से तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है.
So let's say this is the center. ओके, तो ये बन जाएगा स्क्वायर। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ पे रेडियस, द सर्कल विथ रेडियस 2 इज प्लेस्ड अगेंस्ट द राइट एंगल अनदर स्मॉलर सर्कल, so this is 2 centimeter, this is also 2 centimeter, this will be 2 centimeter, this will be 2 centimeter, another circle, इसका रेडियस, अभी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो होगा यहां तक, ठीक है। फर्स्ट थिंग लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, ये यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, ये गैप जो है, look at this gap, we need to, this is not the diameter, okay, यहाँ पे इसका कॉर्नर टच नहीं होने वाला है, यहाँ पे एक गैप रहने वाला है, सो यू नीड टू इंक्लूड दैट गैप एज वेल, दैट्स अ माइन्यूट गैप, राइट, अप्रोक्सीमेटली तुम सोच सकते हो, बट डेफिनेटली आंसर ऑप्शंस कुछ ऐसे नहीं थे कि तुम अंदाजा लगा सको, so you have to solve it, so I'll just tell you a method to solve. Okay, so ये 2 है, ये 2 है, तो अगर मैं डायगोनल कनेक्ट कर देता हूँ, this diagonal, I hope all of you know diagonal of square क्या होता है, a square plus a square, बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम भी तुम लगा सकते हो, तो कितना हो जाएगा, twice of 2 square, that is 2 root 2. So this diagonal is 2 root 2, a b c d. Then what we will be doing, I'll be drawing one more circle, and let's this point here a b c d, let's this center of this circle be e, and this point is c. Okay, let's say radius of this circle is r, this is r, so this diagonal of the smaller square will be r root 2, right? Okay, now we know this is 2 and this is the diagonal, let's say this point is, हमने कौन सा नहीं लिया है, f नहीं लिया है, okay, so can you tell me what is fc, the length of cf, cf is r plus, cf is r plus, basically cf को मैं ऐसे लिखता हूँ so that you won't get confused here, okay, hopefully all of you with me guys, be careful while solving this question. Okay, cf अगर हमें चाहिए तो cf के लिए मैं लिख सकता हूँ fe plus ec is the diagonal, okay, ec is the diagonal and fe तो radius है, so this is r, and cf का वैल्यू जो है cf r plus r root 2 ऐसे भी बोल सकते हैं, और वही cf को मैं क्या बोल सकता हूँ, cf is always also equals to ac minus af, right, and ac is 2 root 2 minus af is 2, so these are the two values, this is also cf equation 1 and this is also cf, that is equation 2, and now you will get r plus r root 2 must be equal to 2 root 2 minus 2. That's quite tricky, and answer option कुछ ऐसे थे guys, 1 plus root 2 यहाँ पे आएगा r कॉमन लेने के बाद, and this will be 2 root 2 minus 2, and you'll get the value of r as 2 root 2 minus 2 upon 1 plus 2.
ओके सो ऐसा ही कुछ आंसर ऑप्शन था, रूट 2 में ही था. सो दैट्स व्हाई आई सेड कि तुम अंदाजा नहीं लगा सकते, बिकॉज ये तो तुम कैलकुलेट नहीं करते रहोगे 4 ऑप्शंस देख के, राइट. ओके सो इसके आगे भी थोड़ा सा हो सकता है. आई एम नॉट श्योर अबाउट कि ये आंसर ऑप्शन में था, क्योंकि इसको आगे रैशनलाइज तुम कर सकते हो. r इज 2√2 माइनस 2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा इस अपने पास 1 प्लस रूट 2 आया, मैं उसको लिखता हूँ √2 + 1, नॉट अ बिग डील. Then I'll multiply it by √2 minus 1 numerator as well as in denominator. This is how we rationalize, क्योंकि हम denominator में रूट नहीं रखते हैं normally. That's the way we write in maths. So denominator will be just 2 minus 1, it will be 1. And here अगर हम √2 से multiply कर देते हैं, these two brackets, if you multiply √2 into 2√2 will be 2 into 2 4 minus 2√2 and then minus 2√2 and then plus 2. Right, that's right. So it has to be 6 minus 4√2. That could be in the answer option. Quite tough to guess from the answer option. Okay. So answer option मैंने intentionally रखे नहीं है यहाँ पे. But anyways रख भी लेते तो कोई problem नहीं. So let it any other way. Let it be. Okay, so I do have one more question for the day. Question of the day, you can say. This one. So let's quickly finish it. It's not that tough, but थोड़ा सा तुम्हें logically सोचना है तो ये solve हो जाए. We know this is 10 and this is so if I connect it here, this is the radius, right? And then so now we know this is also radius, so it forms a square here, and definitely this is also radius. So radius, bit creativity तुम्हें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा. So I want from your side this distance will be r minus 10 and this distance will be r minus 20. Okay, so this is r minus 20, this is r minus 10 and this is radius. एंड होपफुली इसके बाद तो किसी को डाउट भी नहीं आएगा ये क्वेश्चन में. चलो क्या करना पड़ेगा हमें, पाइथागोरस थ्योरम, राइट. सो गाइस क्या होता है कैट में बहुत बार
पाइथागोरस थ्योरम पे क्वेश्चन आ जाते हैं, बट द थिंग इज इतना इजी नहीं होता. ये भी पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है, बट इट्स नॉट दैट इजी. तुम्हें डायरेक्टली देख के नहीं लगा है, थोड़ा सा तुम्हें कनेक्ट करने पड़ेंगे क्लूज, थोड़ा क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा, देन ओनली विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड. एक्चुअली ये क्वेश्चन अगर तुम्हें समझ में आ गया तो हार्डली 1 मिनट का क्वेश्चन है. सिंपली r-20 होल स्क्वायर, सॉरी r-20 होल स्क्वायर प्लस r-10 whole square must be equal to r square, and you can get the value of r, right? So this will be r square minus 20 into 40, 2 into 20 into r plus 400 plus r square. I'll write it directly, minus 20r plus 100 equals to r. So it will be 2r square. now होगा ये 20 into 240r minus 20r minus 60r plus 100 equal square. So r square तो माइनस हो जाएगा, तो r square minus 60r plus 100 equals to 0. So I want numbers whose multiplication is 100 and whose addition is minus 60. Or not hundreds, fine. Okay, so we want a number whose multiplication is 50, sorry, 500 and addition is minus 60. So you can say it is 50 into 10. Minus 50 into minus 10 leads to positive. Minus 50 into minus 10, it's 500, and minus 50 minus ये positive 500 आएगा, right? So the radius must be 50 or 10. अब 10 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये रेक्टेंगल 20/10 का है, तो रेडियस तो 10 से ज्यादा ही होगा ना. यहाँ पे r-20 r-10 है, सो 10 वी आर गोइंग टू नेग्लेक्ट, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, so radius has to be 50. As simple as that. Hopefully all of you understood this. Okay guys, so that's it for the day. So I am soon going to start with the plus course from Friday, जहाँ पे मैं numbers पढ़ाने वाला हूँ. अगर तुम्हें plus course attend करना है, you can join, you can take the plus subscription of Unacademy. What you need to do, you need to go to the Play Store and download the Unacademy learning app, और डाउनलोड करके तुम प्लान सिलेक्ट कर सकते हो. एंड इफ यू यूज दिस कोड SHAM1, you'll get 10% of discount. So you can share with your friends, and do not forget to use this code SHAM1 to avail 10% of discount. So that's it for the day guys. So do subscribe to our channel and do like, share, comment, and do not forget to press the bell icon so that you'll be notified about our upcoming live session. You can also join us on Telegram, where you'll be getting the Telegram, we are there by the name of CAT4MBA, where you'll be getting the PDF notes of the sessions that we conduct here, as well as on the Unacademy platform. So guys, अगर plus course attend करना है, I'm going to start with the plus course from Friday, that is 21st. So see you there. That for the day. Good night. Hopefully